Yeah, good evening, namaskar to all of you. Am I audible, Dr. Srijit? Yes, sir, it is audible. Okay. Is it moving? देखो ठीक से देख लीजिए. Is it moving? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. On behalf of India Meteorological Department, Minister of Earth Sciences, and my personal behalf, I extend a warm welcome to all our friends from press and electronic media. Today, we will have an updated seasonal outlook for the hot weather season, and also the monthly outlook for April 2025 on rainfall and temperature. If you remember, we issued a seasonal outlook for hot weather season for the March to May. Therefore, it is the updated seasonal outlook for April to June. Now, if you look at the rainfall during the month of March 2025, it was a deficient month. Country as a whole, it was 20.1 millimeter against normal of 29.9 millimeter. So thus, it was deficient by 32.6%. On the left-hand side, you can find out the rainfall, country as a whole, Northwest India, East and Northeast India, Central India, and South Peninsular India. In the middle diagram shows those regions as bifurcated. On the right-hand side, it is the meteorological subdivision basis rainfall. You will find that in many subdivisions, it has been deficient or scanty rainfall, except South Peninsula, especially Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and Lakshadweep. And the eastern part, it is Odisha and Jharkhand, where it was normal and excess. And Uttarakhand, of course, it was normal. Otherwise, all other subdivisions has deficient rainfall. Now, if you look at the time series of rainfall starting from 1901, you will find that it is not any such surprise, or it is not any such record-breaking rainfall phenomena during the month of March. So it was 27th lowest if you consider data from 1901, and 10th lowest considering data from 2001. If I consider the South Peninsular India, it has become, as you know, that good rainfall activity over Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Lakshadweep, and Karnataka. So it was 24th highest rainfall considering 1901. It was the 8th highest considering rainfall from 2001. But I want to say that it was a good rainfall activity in Peninsular India, but country as a whole, it was a deficient rainfall. Now let us look at the occurrence of the heavy rainfall. If we look at on the left-hand side diagram, it shows the point of occurrence, the region of occurrence. You will find it has occurred in Himachal Pradesh and Uttarakhand. If you remember that avalanche and snowfall, etc. So it has occurred there. And there is another region where it is northeastern states, especially northeast Assam, Tripura, and Meghalaya, where we have also heavy rainfall activity. The third region was the Odisha and adjoining Andhra Pradesh, where you have got the heavy rainfall activity during this thunderstorm and passage of western disturbances. Then in the peninsular India, there was heavy rainfall activity over Tamil Nadu and Kerala. So if I compare those occurrence of heavy rainfall activity, you will find that this year the total 60 events occurred in heavy rainfall and very heavy rainfall, 6 events. And last year it was 58 and 6. So therefore, this year activity in the month of March 2025 was almost similar to that of 2024. In the recent time in 2023, there was very excess activity with 100 occurrence of the heavy rainfall and 5 very heavy rainfall events.
Now, if you look at the temperature during March 2025, the upper panel shows the maximum temperature, minimum temperature, and mean temperature, and the lower panel shows the maximum temperature anomaly, minimum temperature anomaly, and the mean temperature anomaly. So what you find that the maximum temperature anomaly, if I just look at it, was quite warmer this year, and especially the northern part, central part, and northern peninsula, it was above normal. Yellow color indicates the above normal. And especially if I look at the orange color, it was the Saurashtrian Kutch, some parts of Vidarbha, Odisha, and adjoining Chhattisgarh, where temperature was specifically higher. The minimum temperature, if I just look at the western part of country, was a warmer night, and also eastern part, it was a warmer night, but the central part, it was cooler or nearby to the normal. Let us take a look about the ranking of the all India temperatures. Here also you'll find that it was not in any rank holding temperature. It was not within 10 at least. All India temperature, maximum temperature was 14th highest, minimum temperature was 12th highest, and mean temperature 11th highest. Similarly, Northwest India temperature, Northeast India temperature, Central India temperature, just look at it was not any such. But Central India, if you just look at it, is 11th highest for maximum temperature, 8th highest for the minimum temperature, and 8th highest for the mean temperature. South Peninsular India, similarly, it was 10th highest for maximum temperature, 9th highest for minimum temperature, and 6th highest for mean temperature. That means country as a whole, there was no such record temperature, but Central India was warmer and it was 8th highest for minimum and 11th highest was maximum. Similarly, South Peninsular India was the 10th highest for maximum and 9th highest for the minimum temperature. That means warming was more in Central and South India as compared to northern parts of the country. Now, if we just look at the forecast versus observed heat wave conditions, on the left-hand side is the climatology of heat wave conditions in the month of March. Usually, the southern parts of the central India and northern parts of peninsula get heat wave conditions. And this was the forecast. The central figure is the forecast of heat wave conditions, what we issued for the month of March. And here on the right-hand side was the area where heat waves occurred. So mainly, if I just look at the central part of country, starting from Gujarat up to Odisha and West Bengal, there was heat wave conditions. But heat wave condition was more over the Gujarat, Vidarbha, and Odisha. So above normal heat wave conditions developed over Gujarat, Vidarbha, and Odisha. Otherwise, in other regions, it was near normal conditions. So prediction was that there will be above normal heat wave conditions over the central and northern parts of peninsula. You will find it has occurred, but it has not occurred over Madhya Pradesh, and but remaining area it has occurred to a large extent. Now let us look at other severe weather event in the month of March. It is the beginning of the summer season, and there was intense thunderstorm activity. There was western disturbances, heavy rainfall activity, also squall and hailstorms. Let us look at the first diagram. The thunderstorm days. We look at thunderstorm days, it was quite high, 11 to 15 days thunderstorm occurred over Assam, Nagaland, Manipur, and Tripura. 6 to 7 days occurred over remaining parts of East and Northeast India. And this is the region where we get the thunderstorm activity in the month of March. In the south, we get a very good number of days, 9 to 10 days of thunderstorm activity occurred over Tamil Nadu and Kerala, as well as the Lakshadweep area. In the north, similarly, in the western Himalayan region, because of the western disturbances, we got 7 to 10 days of the thunderstorm activity, Jammu and Kashmir, Himachal, and Uttarakhand area. So next diagram, let's look at this is the hailstorm days. How many days hailstorm occurred? You will find that hailstorm days, it was more in, again, northeastern parts, that is Jharkhand, West Bengal, and Assam, Meghalaya. In the north, it was Haryana, Chandigarh, Delhi, and Himachal Pradesh, Uttarakhand, where it occurred more. In the south, it was the Telangana, where 4 events occurred. That 4 days occurred hailstorms in the month of March. But I will come to discuss a specific case of hailstorm which occurred over Odisha and adjacent GWB, and West Bengal and Jharkhand. It was a rare hailstorm that we'll discuss in detail afterwards. And this is the squally and gusty wind. You will find that
About 7 to 8 days of gusty winds prevailed in the peninsular India, starting from Tamil Nadu, then Inter Karnataka, then Madhya Maharashtra, and also Chhattisgarh. It was higher number of squally days or gusty days. Gusty days means days when wind has become gusty, reaching at least 32 kilometers per hour. Squally days means it has exceed at least 40 kilometers per hour. So this is the phenomena. Otherwise, it also occurred in Northwest India and entire Eastern India. The squalls and gusts occurred in the month. On the rightmost, it is the heavy rainfall that already I have discussed it earlier. It occurred along the east coast. There was heavy rainfall activity. In the west coast in Kerala, also heavy rainfall activity, and peninsular India, northeastern states, there was heavy rainfall activity in the month of March. So, if you look at the overall picture, what happened actually in the month of March, there are 4 active western disturbances. 2 to 5, 12 to 17, 18 to 20, 23 to 27 March. And these western disturbances affected Northwest India and they moved towards the east. And there was an anticyclone circulation over Bay of Bengal. So there was convergence of 2 types of wind, dry, cold wind from the west and warm, moist wind from the Bay of Bengal. And because of that, whatever you see this along the east coast and adjoining areas, what activity you find from these 4 diagrams, that is because of these 2 types of converging winds, which led to thunderstorm activity and associated hailstorms, heavy rain, squall, and gusty winds, etc. So basically, if you look at East Central India, it occurred in 18 to 23 March. East Central means it includes Odisha, Chhattisgarh, East MP, etc. So an intense hailstorm occurred in the Mayurbhanj district of Odisha in Bisoi and Mangirikose blocks during 7:20 to 8:30 p.m. of 20th March with very big size of hailstone with estimated diameter of 6 centimeter. You can just imagine it was a diameter of 6 centimeter and weight was 300 to 500 grams, causing widespread damage in the region. So this is a little more about that. You can see these hailstorms which occurred in Mayurbhanj district and adjoining district of Odisha and adjoining districts of West Bengal like Jhargram and Jharkhand, that is West Singhbhum districts. So this was the status of the hailstorms. It was highly damaging. If you look at the damage, you can find the asbestos were broken because of the hailstorm, and also the tiles, these earthen tiles, it is burnt tiles which are utilized in the eastern part to prepare the houses. You can see in this diagram how it was broken, and you can find the entire tile has broken and some sign has fallen. You can see these are the status. So similarly here you can see in other diagrams also the damage. And as per the state government report, 50 people were injured because of this hailstorm, these 2 blocks. And it occurred in the evening, and therefore the exposure was less. People were in house mostly, but still the damage is like this. So this is the radar animation of that event. You can see here in the Mayurbhanj district here. It was moving from West Singhbhum district. You can find out here, and it was moving towards Jhargram in West Bengal across Mayurbhanj district. So this is the area where it's picking up. It's becoming red color. You can see here that red color. It was very short-lived between 7:20 to 8:30 p.m. We provided Mayurbhanj district hailstorm warning for that particular day, and thunderstorms, etc. Wind speed also provided warning. But what you see that the intensity of the hailstorm, it was not expected. It is very rare phenomena, you can say. But there is a record in India with respect to hailstorm in 1889, I hope. There was a very intense hailstorm over Moradabad district of UP, where around 250 people died. It is written in the at that time the newspapers. We have collected it and the record. It is a record of hailstorms. It was a marriage procession. People were traveling on the road in Moradabad town, and all of a sudden hailstorm occurred and people died. Many livestock, including cows, buffaloes, goats, and also died at that time.
Now let us look at what happened on that with respect to lightning. The left-hand side diagram, it is the lightning count between 6:30 in the evening and 8 o'clock night on that particular day, that is 20th March. You can see that how the lightning has occurred such a massive scale over this Mayurbhanj district in association with that thunderstorms and hailstorms. Lightning density also you can see the flash density was quite high in that area on that particular day during that period of evening 20th March. Now this is the observed rainfall in the month of March on the left-hand side diagram. You can find that there is a good rainfall activity in peninsular India, western part of India, and eastern part of India. And northern part of India, there was less rainfall activity. If you look at the prediction, we predicted rainfall. Yes, South India we gave normal to over normal, and Eastern India also we told normal to over normal rainfall activity. It has occurred. Only thing is here it was predicted that below normal, but it has normal rainfall activities occurred in parts of northwest India. So therefore, reasonably the rainfall map, whatever occurred in the month of March, could be predicted, except the parts of northwest India. Now this is the observed temperature. Right hand side is the forecast temperature. You can see we told that it will be normal to above normal temperature for most parts of the country, except South Peninsular India, extreme South Peninsular India like Tamil Nadu, adjoining Rayalaseema, Karnataka, etc. And if you look at this diagram, it has occurred in that area. It has become normal to below normal temperature, and many parts, or most parts, in the remaining parts of the country, it has become above normal temperature, maximum temperature, except this area, that is Ladakh and adjoining Jammu, Kashmir, and here northeast states like Arunachal Pradesh and adjoining areas of Assam. There it has become normal to below normal temperature. So therefore, again, I would say that the maximum temperature also could be predicted well, except a few pockets in Jammu and Kashmir, Ladakh, and Arunachal Pradesh and adjoining areas. Now let us look at the minimum temperature. The minimum, the right-hand side diagram, minimum temperature showed that many parts it will be above normal temperature, and there will be below normal temperature in some parts of West Central India and Peninsular India, or normal temperature. But actually, if we just look at the actual diagram, the normal temperature occurred in a large area. So therefore, minimum temperature could not be predicted so well, unlike the maximum temperature and the rainfall. We'll look into this fact, what happened actually. Otherwise, many parts also above normal temperature was realized as predicted. Now let us look at the sea surface temperature across the globe. If you look at this diagram, you will find that this is the warming in East Equatorial Pacific, also warming in West Equatorial Pacific, but there is cooling in Central Pacific. Similarly, here, Indian Ocean dipole region, if you just look at the near Somalia coast, it is cooling, and near Indonesia, it is warming. If we look at the time series of Nino 3.4, you will find that temperature was falling, and now temperature is rising, but it's within normal. That is neutral ENSO condition is moving towards neutral El Nino southern oscillation conditions, considering Nino 3.4 region, which is very important for India. Now, let us look at the forecast. If we look at the El Nino southern oscillation forecast, what you find here, the gray color indicates the neutral condition, and the blue color indicates the La Nina conditions, the red color indicates the El Nino conditions. So it shows that in the April, May, June, the most probable is the neutral condition, followed by the La Nina conditions. As all of us know that weak La Nina conditions are continuing. Now, neutral conditions, we are expecting in the month of April, we are expecting neutral ENSO conditions. There is a good chance, 75% chance by the various models to have the ENSO neutral condition. And if you just look a little more towards the, say, for example, monsoon season, you can see that ENSO neutral conditions are likely to continue till monsoon season. A neutral impact of the El Nino southern oscillation. Now, if I look at the various types of models from international centers, all are also indicating that it will be neutral conditions in the summer season and also ensuing monsoon season. Indian Ocean dipole, just look at, I told you that near Somalia coast is becoming negative. It is slightly negative there, but within the neutral conditions. The neutral Indian Ocean dipole is prevailing, and also neutral Indian Ocean dipole will continue to prevail in the summer season. Now,
Let us look at the our multimodal climate forecast system run in Ministry of Earth Sciences. So here also it shows that there is highest probability for neutral ENSO condition during April to June, and of course following that in the summer monsoon season, that is June to September. So the here green color indicates the neutral condition and blue color indicates the La Nina conditions. There is a very small probability for El Nino conditions. So El Nino is ruled out till monsoon season. We will have neutral ENSO conditions. Now this is the Indian Ocean dipole. When near Somalia coast is warm and Indonesia coast is colder, it is called as the positive Indian Ocean dipole, opposite negative Indian Ocean dipole. And at present, if we just look at the green color here indicates neutral Indian Ocean dipole conditions. The red one is the positive Indian Ocean dipole, and the blue one is the negative Indian Ocean dipole conditions. What you see here, so here it is a neutral Indian Ocean dipole conditions April, May, June, and gradually you find that the negative Indian Ocean dipole conditions are picking up towards June, July, August, but still neutral conditions. So either neutral or negative Indian Ocean dipole are expected when you move towards the monsoon season. But during the summer, that is April, May, June, we are expecting neutral Indian Ocean dipole conditions. Now let us look at the temperature outlook for April to June. So here again, if you just look at this diagram on left hand side, this is the maximum temperature, right hand side the minimum temperature. Both maximum and minimum temperatures are indicating that temperature will be above normal in many parts of the country. In case of maximum temperature, except peninsular India, starting from South Maharashtra till Kerala and across Karnataka, this is the area where you can expect normal to below normal maximum temperature. Similarly, some parts of Odisha and West Bengal and southern West Bengal, some parts of Jammu and Kashmir and Ladakh, there you can see the green color, which indicates that the normal maximum temperatures. Otherwise, many parts in the country, we are expecting above normal maximum temperature. Minimum temperature also similarly, we are expecting above normal minimum temperature in most parts of the country. Now, if I look at the month of April, I find that the central India and as in North Peninsula and Eastern India, central Eastern, this is dark red color. Central East, this is the area where there is a high probability that maximum temperature will be above normal. Northern parts of country, especially Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, northern parts of Punjab, we can expect normal maximum temperature. So right hand side is the minimum temperature. Here you can see that it is also expected to be above normal conditions except extreme northwest India, where in some parts you can have the normal temperature. Now, this is the heat wave outlook for April to June. It shows that there will be above normal heat wave days over the central and northern parts of the country and also adjoining North Peninsula and East Coast. So, but how many days above normal? If you see, it is 2 to 3 days above normal. In some
this even earlier we were talking about. But India is yet to announce tariff. Yeah. So we are not even, because see, earlier opinion, what we would do is we would do a calculation and say, like if salary of this amount. So that also we have not done. ऋतु है, ये ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान रहने का संभावना है, जैसे आप यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में, सिवाय उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सा इक्का दुक्का इलाके में छोड़कर जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। सो मिनिमम टेम्परेचर लगभग सभी जगह में कैंसी, जैसे ग्रीन स्पॉट आप दिखाई दे रहे हैं वो छोटा छोटा एरिया में है। सो मिनिमम टेम्परेचर एबो नॉर्मल रहने का संभावना है। तो अप्रैल महीने की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम टेम्परेचर का पूर्वानुमान है अप्रैल महीने का। अप्रैल 2025 के महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, सिवाय दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर जहां सामान्य अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। जैसे आप दिखाई दे रहा है यहाँ, ये जो एरिया है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है जम्मू एंड कश्मीर में और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ फिर सदर्न पार्ट्स में साउथ तमिलनाडु और साउथ केरला एरिया में जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होने का संभावना है। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो लगभग देश की पूरे हिस्सा में मिनिमम टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रहने का संभावना है। सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत का जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश कुछ इलाका जहाँ ग्रीन ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वहाँ नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सो हीट वेव की बात करें अप्रैल टू जून के दौरान सीजन के लिए देश भर में हीट वेव दिनों की संख्या के लिए विसंगति सामान्य से विचलन पूर्वानुमान चित्र दिखाया गया है। अप्रैल में जून के गर्म मौसम ऋतु के दौरान दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य भारत, पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक हीट वेव होने का संभावना है। और ये जैसे मैं बोल रहा था 2 से 4 दिन अधिक हीट वेव रिकॉर्ड होने का संभावना है। अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल 2025 के लिए देश भर में हीट वेव दिनों का संख्या के लिए विसंगति पूर्वानुमान चित्र में दिखाई दिया गया है। अप्रैल 2025 के दौरान प्रायद्वीपीय भारत से सटे पूर्व और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक संख्या में हीट वेव या उष्ण लहर दिन होने का संभावना है। और स्पेशली ईस्ट इंडिया और ईस्ट सेंट्रल इंडिया जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ईस्ट यूपी, बिहार एंड एडजनिंग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, ये एक इलाका है। और यहाँ गुजरात और इसका जो एडजनिंग एरिया ऑफ महाराष्ट्र
और इसमें ज्यादा हीट वेव होने का संभावना है। बारिश की बात करें तो अप्रैल 2025 में पूरी देश के लिए सामान्य वर्षा होने की संभावना है। सामान्य का अर्थ होता है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 88% से 112% के अंदर बारिश रहेगा। और लॉन्ग पीरियड एवरेज अप्रैल महीने के लिए 39.3 मिलीमीटर है। वो ये जो आंकड़ा है ये 1971 से 2020 तक जो डाटा हमारे पास है इसके ऊपर आधारित है। और चित्र को देखें तो साउथ पेनिनसुला, वेस्ट सेंट्रल इंडिया जैसे गुजरात, राजस्थान वगैरह, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सदर्न वेस्ट बंगाल से शुरू करके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तक, इस सब इलाके में नॉर्मल से वो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। जबकि रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ कंट्री जहां येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है वहां बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है आपको, डॉट्स दिखाई दे रहा है चित्र में, वो एरिया है जहां हमारा नॉर्मल रेनफॉल अप्रैल महीने में कम है। इतना कम है कि इसका वेरिएबिलिटी एक साल से दूसरे साल से वेरिएशन होता है बहुत लार्ज है, इसलिए इसमें जो प्रेडिक्टेबिलिटी तो कम होता है। और जो व्हाइट स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब एरिया है जहां मॉडल का प्रेडिक्शन नहीं है, मॉडल से पॉसिबल नहीं हो रहा है बोलने के लिए कि ये ज्यादा बारिश होगा कि कम बारिश होगा, कि सामान्य बारिश होगा। मॉडल का लिमिटेशन है उस एरिया में जहां आपको सफेद इलाका दिखाई दे रहा है। अभी हम एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो वीक 3 अप्रैल से शुरू होने वाला है, यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं। वो 3 अप्रैल में जो बारिश है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अच्छा बारिश होने का संभावना है, मगर फिर भी आप कंपेयर करें नॉर्मल के साथ तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगा। मैंने 3 अप्रैल 10 अप्रैल जो वीक है इसमें बिलो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर वगैरह में। मगर जो केरला एंड साउथ इंटर कर्नाटक एरिया है वहाँ एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है 3 to 10 अप्रैल। और इसके बाद जो वीक है जैसे 10 अप्रैल से 17 अप्रैल वहाँ भी अच्छा बारिश होगा तमिलनाडु केरला के हिसाब से। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगा फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में अच्छा बारिश होगा। सिमिलरली थर्ड वीक की बात करें यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट। सो हम यही बोलना चाहते हैं कि बारिश तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ज्यादा होता ही है अप्रैल महीने में और होगा ही, मगर 10 तारीख से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बारिश बढ़ेगा और एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा। सो ऐसे भी रिकॉर्ड है पास्ट में कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे कि साउथ असम वगैरह में हेवी रेनफॉल की वजह से, थंडरस्टॉर्म की वजह से अप्रैल महीने में भी लैंडस्लाइड हो जाता है और फ्लड यानी बाढ़ भी आ सकता है। सो इसलिए हमको सजग रहना पड़ेगा इस बार कि अप्रैल महीना में 10 तारीख से शुरू करके एंड तक, यू कैन से 24 अप्रैल तक अच्छा बारिश दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। सो हम लोग को तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए सीवियर वेदर के लिए, जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल एंड एसोसिएटेड लैंडस्लाइड्स वगैरह के लिए। इसके साथ साथ जो साउथ पेनिनसुला है जैसे कि तमिलनाडु, केरला, इस इलाका में भी अच्छा बारिश होने का संभावना है सभी हफ्ता में। बिलो नॉर्मल से एबो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल रेनफॉल नहीं होगा, एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा। माने साउथ इंटर कर्नाटक कुछ हिस्सा जैसे कि वेस्टर्न घाट एरिया और कोस्टल कर्नाटक और केरला, इसमें भी आप देखेंगे 3 तारीख से शुरू करके 24 तारीख तक इसमें एबो नॉर्मल रेनफॉल दिखाई दे रहा है। सो वहाँ एबो नॉर्मल रेनफॉल होने के कारण यही है कि वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता है इस महीने में, और थंडरस्टॉर्म की वजह से वहाँ लाइटनिंग भी होता है और गॉस्टीनेस वाली विंड भी हो सकता है, और इसलिए भी हम सभी सतर्क रहना चाहिए। सो 2 एरिया है अभी एज पर आवर फोरकास्ट, एक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दूसरा है केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटक का जो हिस्सा जो कि वेस्टर्न घाट्स के पास है, जैसे कि हसन, कोडागु वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स जो लगे हुए हैं उत्तर कन्नड़ा दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ। सो उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, दार्जिलिंग घाट एरियाज ऑफ द साउथ इंटर कर्नाटक और केरला का सभी डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा, यानी इंटेंस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, इसलिए लाइटनिंग हो सकता है और स्क्वाल गस्टी विंड्स भी हो सकता है। हम सब सतर्क रहना चाहिए। ऐसे कि इसके साथ साथ जो सी एरिया है, कोस्टल एरिया जो है केरला के पास, वहां भी थंडर स्क्वाल वगैरह होगा, इसलिए जो फिशरमैन है वो सभी सतर्क रहना चाहिए।
सो इसके साथ टेम्परेचर की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर आप जैसे दिखाई दे रहा है कि ये जो वीक आ रहा है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल, इस वीक में नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, राजस्थान टू ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार टेम्परेचर एबो नॉर्मल रहेगा। और यही एरिया है जहां भी टेम्परेचर एबो नॉर्मल रहेगा नेक्स्ट वीक में 11 to 17 अप्रैल और 18 to 24 अप्रैल। यानी जो एरिया जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है अप्रैल महीने में वहाँ एबो नॉर्मल टेम्परेचर रहने का संभावना है। मगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें वहाँ बिलो नॉर्मल टेम्परेचर होने का संभावना है। जैसे ब्लू कलर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ ज्यादा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो ज्यादा रहेगा इसलिए क्योंकि वहाँ बारिश होगा तो क्लाउडीनेस रहेगा इसलिए ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। बट इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में ये टेम्परेचर नॉर्दर्न टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और दोनों डे एंड टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर ज्यादा रहने की वजह से डिस्कम्फर्टनेस बढ़ने का संभावना है 4 अप्रैल के बाद जो वीक आ रहे हैं और ये कंडीशन कंटिन्यू करने का संभावना है। सो दोनों मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर अगले 2 हफ्ते के लिए नॉर्मल से वो रहने का संभावना है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में और एडजॉइनिंग एरियाज में। मगर पेनिनसुलर इंडिया अच्छा ही रहेगा। टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहने का संभावना है जो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर भी। सर थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। अभी आपको कुछ प्रश्न है तो कमेंट से तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर मॉनसून को लेकर कुछ बताया नहीं सर। मानसून का जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है मिडिल ऑफ अप्रैल हम लोग जारी करते हैं। और अभी मैं सिर्फ लास्ट के प्रोसेस के बारे में बताया जो आप लानिना और एलिनो कंडीशन देख रहे थे। हमारा जो प्रेडिक्शन है इसके कि न्यूट्रल एलिनो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशन, न्यूट्रल एनसो कंडीशंस होने का संभावना है मानसून सीजन पे। सिमिलरली इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन भी न्यूट्रल होने का संभावना है। मगर क्वांटिटेटिव बारिश कितना होगा इसका जानकारी हम मिडिल ऑफ अप्रैल, अराउंड मिडिल ऑफ अप्रैल जारी करेंगे। सर कुणाल सर फ्रॉम इंडिया टुडे। हाँ कुणाल जी। सर ये एक जो फिनोमेना दिख रहा है फॉर द लास्ट सो मेनी मंथ्स वी आर विटनेसिंग above normal temperature both minimum and maximum. There are different kind of conditions as you know कि variable conditions are changing still the temperature is remaining above normal both maximum and minimum. Why this kind of phenomena is continuously coming up? Is this due to global warming, and what are the regions you can attribute? आपने सही बताया कि कंटिन्यूसली आप जैसे देखा कि लास्ट 3 मंथ्स टेम्परेचर एबो नॉर्मल रहे हैं इस मंथ पे इंडिया में। और सिर्फ अप्रैल महीने में थोड़ा राहत मिला कि मिनिमम टेम्परेचर आपका मैनी पार्ट्स इन द सेंट्रल पार्ट नॉर्थ टू साउथ बिलो रहा कि नहीं तो नॉर्मल रहा। बट कंट्री एज ए होल आप देखेंगे तो टेम्परेचर एबो नॉर्मल रहा। बट फिर भी मार्च महीने में कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग एबो नॉर्मल नहीं रहा टेम्परेचर। इट वाज अराउंड 10 और 8। बट स्टिल यू आर करेक्ट। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि आप देखेंगे कि एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड यही है कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जिसका इम्पैक्ट पूरा दुनिया में होता है कॉज भी कहाँ भी हो। और जो रीजनल प्रोसेस है, रीजनल प्रोसेस में इस बार सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बन पाया जिसकी वजह से बारिश बिलो नॉर्मल रहा। बिलो नॉर्मल बारिश होता है दैट मीन्स तो आपका टेम्परेचर ज्यादा राइज करता है। और यूजुअली इन द मंथ ऑफ मार्च 4 to 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट करता है नॉर्थ वेस्ट एरिया को। बट दिस टाइम गॉट 2 4 तो था ही मगर ये 4 में 2 ज्यादा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जिसकी वजह से बारिश हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मगर फिर भी माने मंथ एज ए होल डेफिशिएंट रहा। सर Is this जय new श्री normal? from क्या ये नया नॉर्मल है? Above temperature हम कह दें कि is this new normal है और it is temperature is above normal for the country as a whole. If you look at both maximum and minimum temperature, but it was not so high, it was not record breaking in the month So of March. I wanted to ask between बोलिए मैडम April जयश्री। and
हाँ सर, अप्रैल और जून के बीच में अबव नॉर्मल हीट वेव डेज जो है हम बोल सकते हैं कि 5 से 10 तक हीट वेव डेज जाएंगी या 6 से 10 तक। मैं बोला 6 4 to से 10 6 days। बोला 4 से 6 दिन ज्यादा हो सकता है। दैट मीन्स टोटल करेंगे तो 10 तक पहुंच सकते हैं, कुछ एरिया में 10 दिन तक पहुंच सकता है। मैंने हाँ एवरेज के 10 साथ दिन तक ना, मिलाएंगे अप टू। हाँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री स्पेशली इट कुड बी हाँ, अप टू 10 days, सर राइट सर? यस सर इस मैक्सिमम। बार या हेलो अनिरुद्ध जी का मैं देख रहा हूँ। सर अनिरुद्ध मैं भी शर्मा यही जी। जानना चाह रहा था। सर मैं भी यही समझना चाह रहा था, ये जो आपने अप्रैल टू जून वाले जो बताया वो एग्जैक्टली नॉर्मल कितने हैं और आप कितना ज्यादा बता रहे हैं, और फिर पर्टिकुलर अप्रैल में कितने हैं और कितने ज्यादा वही होंगे? बोल रहा हूँ, अप्रैल से जून में नॉर्मल होता है आपका 4 to 7 days। करेक्ट। Okay, and we are expecting that this time there will be 2 to 4 days additional days. So therefore there will be certain pockets जहाँ 10-11 दिन हो जाएगा और कुछ पैकेट्स में 5-6 दिन हो जाएगा। सर ये जो 10 और 11 दिन आप जिनको बताना चाह रहे हैं वो कौन से स्टेट्स वो होंगे? ईस्टर्न इंडिया particular? स्पेशली ज्यादा पॉसिबिलिटी ईस्टर्न इंडिया में है, जो है कि मतलब बिहार, उड़ीसा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्ट यूपी। ठीक है, मतलब राजस्थान या इधर गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ इन होगा सब में। नॉर्मल से जितना नॉर्मली होता है वहाँ और 2 दिन ज्यादा होगा, मगर वहाँ थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा मैक्सिमम होने का संभावना कौन से ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा है? हम्म? पूर्वी इलाकों में ज्यादा चांसेस है? पूरी इलाके में ज्यादा चांसेस है, एंटायर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। मगर आप फ्रीक्वेंसी देखें, नंबर ऑफ डेज देखें, तो जैसे मैं बताया ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा चांस है। सर हाँ ये चिंतेश जी। हाँ सर, इस बार सर चक्रवात की स्थिति क्या रहेगी सर? चक्रवात की कोई लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता नहीं, मंथली फोरकास्ट होता नहीं, मगर हम सिर्फ देते हैं फोरकास्ट एवरी थर्सडे में अगला 15 दिन के लिए फोरकास्ट देते हैं। वो फोरकास्ट के हिसाब से कोई चक्रवात हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अगले 15 दिन में, मगर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होने का संभावना है और इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। इसका क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा फिर हम अपडेट करेंगे, तो आने वाले थर्सडे को इसको अपडेट करेंगे। लास्ट थर्सडे में दिए हैं कि एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सकता है बे ऑफ बंगाल में, तो इसका अपडेट आएगा थर्सडे को। सर दिस इज संदीप दास फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस। Yes sir, Sandeep sir. You said that El Nino condition will be neutral during the April-June condition, which means that it won't have El Nino, which adversely impact monsoon, won't have an impact on this monsoon. That's exactly the. You are right. We are not expecting El Nino condition in monsoon season and not in the summer season also. We are expecting neutral ENSO condition to begin in the month of April itself, and it will continue till the monsoon season. Okay, that means we can assume that it will be a normal in the sense. No, it is not the only factor, no. Correct. Okay. There are many other factors, and therefore all will be taken into consideration. And we have a dynamic modeling system, then a multi-model ensemble. Considering all these, we provide forecast every month. Whatever forecast I presented today, also that is based on multi-model ensemble, the dynamic climate forecasting system. Best 5 models we consider among in the world, and in-house dynamical statistical modeling is done. We provide this probabilistic forecast. The same procedure will continue for every month, and monsoon season forecast also. And La Nina is currently new, will be developing, you said, basically. And no. See, this ENSO is El Nino and Southern Oscillation. Southern Oscillation is a phenomena in the atmosphere, and El Nino or La Nina is a phenomena in the ocean. So these two are coupled with each other. Therefore, it is called as only one, that is ENSO, El Nino Southern Oscillation. Now, at present, it is a neutral condition. That means there is no El Nino condition, no La Nina condition. It is a neutral condition, and this neutral condition will continue. Okay. Thank you, sir. Till the end of the season, you said. Yeah. Now every week La Nina we are telling, but in the April it will become neutral conditions. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah. I think Chintesh ji wanted to ask something. सर जितेंद्र देसाई सर। जितेंद्र जी, अच्छा, डस्ट स्टॉर्म का क्या है सर? Is there a
prediction or chance of dust storm in April, May? Yeah, every year we get the dust storm in the April, May, especially in the month of May, because of the heating. Dust storm arises because of two reasons. One is the in situ dust storm, within India, Rajasthan, Gujarat, and Northwest India gets dust storm because of the intense heating and lack of moisture, and sometimes because of the pressure gradient. The pressure difference between, say, for example, Delhi and Mumbai increases. It becomes too high, so leading to low type of winds which raises the dust from the ground. This is called dust raising winds. So we get dust storms or dust raising winds. All these phenomena occurs locally and spreads over the Northwest India plains. Another type of dust storm we get, that is the advective type. That means from Middle East, there could be advection, or the horizontal transfer of dust across, say, you can say Iraq, Iran, or UAE, Saudi Arabia, etc. It can reach up to our region. So we have both the models to predict the dust storms, but these dust storms cannot be predicted in long run. That is, in monthly advance or season advance, we cannot predict. Just like cyclone, we predict about 15 days in advance, or 1 week in advance, 2 weeks in advance. Dust storm will predict only 5 days in advance. Beyond 5 days, dust storm prediction is not accurate. Okay. Okay. Any other questions? Otherwise, thank you very much for listening to me, and we will work together. And I thank you on my behalf and on behalf of India Meteorological Department for your all cooperations. And we'll meet soon for the long range forecast of monsoon in the month of April. Thank you very much. हाँ, ले लीजिए। हाँ, ठीक है, हो गया। जो लोग चलिए अटेंड करते हैं,